History of Classification System. Welcome to the wonderful world of Al-Baqi International, and I am your favorite Al-Baqi RoboQuick. Dear students, in the previous video we studied classification, its aims and principles. Now we will discuss the history of formation of classification system. First of all, we will explore the contributions of various scientists in the formation of classification system. एरिस्टोटल यानी अरस्तु। जानदारों की क्लासिफिकेशन का सबसे पहला सिस्टम यूनानी फिलोसफर अरस्तु ने दिया। उसने उस वक्त तक मालूम तमाम जानदारों की गिरोहबंदी दो ग्रुप्स यानी प्लांटी और एनिमिलिया में की। अबू उस्मान उमर अल जाहिस। 700 ईस्वी के पहले अशरा में अबू उस्मान उमर अल जाहिस ने अपनी किताब में जानवरों की 350 स्पीशीज़ की खसूसियात बयान की। उन्होंने चींटियों के हालात ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ लिखा। इब्ने रुश्द। 1172 में इब्ने रुश्द ने क्लासिफिकेशन पर अरस्तु की एक किताब डी एनीमिया का अरबी में तर्जमा किया। एंड्रिया सीसल पिनो। He was Italian botanist, proposed the first methodological arrangement of plants. He divided plants into 15 groups called genera. John Ray. An English naturalist, John Ray, published important works on plants classification. Augustus Rivinus. He introduced the taxon of order. Tournefort. He introduced the taxa of class and species. Carolus Linnaeus. Grouped species according to similar physical characteristics. Moving ahead, we will study the specifics, characteristics and drawbacks of two-kingdom classification system. टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये सबसे पुराना सिस्टम है और जानदारों की क्लासिफिकेशन दो किंगडम्स यानी किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया में करता है। प्लांटी। इस सिस्टम की बुनियाद जानदारों की खुराक तैयार करने की सलाहियत पर थी। इसके मुताबिक तमाम ऑटोट्रॉफ्स यानी वो जानदार जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं किंगडम प्लांटी में शामिल किए गए। इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में बैक्टीरिया, एल्गी और फंजाई की क्लासिफिकेशन ज़ाहिरी मुशाबहतों की बिना पर किंगडम प्लांटी में की जाती है। एनिमिलिया। तमाम हेट्रोट्रॉफ्स यानी वो जानदार जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते किंगडम एनिमिलिया में शामिल किए गए। ऑब्जेक्शंस और ड्रॉबैक्स। यूग्लिना। Some taxonomists found this system unworkable because many unicellular organisms like Euglena have both plant-like presence of chlorophyll and animal-like heterotrophic mode of nutrition in darkness and lack of cell wall characters. So, there should be a separate kingdom for such organisms. Prokaryotic and eukaryotic cells. This system also ignores the difference between organisms having prokaryotic and those having eukaryotic cells. Now, we will explore the attributes, features, and drawbacks of the three-kingdom classification system. Three-kingdom classification system. Introduction. In 1866, Ernst Haeckel solved the first objection and proposed a third kingdom, for example, Protista, to accommodate Euglena-like organisms. He also introduced bacteria in kingdom Protista. In this system, fungi were still in the kingdom Plantae. Objections or drawbacks. Prokaryotes and eukaryotes. This system did not clear the difference between prokaryotes and eukaryotes. Fungi. Some biologists disagreed about the position of fungi in kingdom Plantae. Fungi resembles plants in many ways but are not autotrophs. They are special form of heterotrophs that get their food by absorption. They do not have cellulose in their cell walls, rather possesses chitin. So, dear students, today we have learnt about the evolution of scientific thought, the contributions of various scientists and the distinctive features of each classification system. Here are some important questions and MCQs related to the topic. You can practice them on your own.